Today, on 5th of August, at Press Club of India, All India Ulama Board organized a convention on the current situation and ham. All the senior authorities of All India Ulama Board was present in the convention. The convention was to inspire board members to work more sophisticatedly and spread the message of Islam, which teaches us the basic of life from birth to death and after death. In the convention, all the senior members kept their views and guided others. The work of Ulama Board is not easy as it represents Islam in all India, that too in the era of Islamophobia. Convention was to present the nature of Islam in India, as Islam don't have any division in the ideology of worshipping just one God, Allah, but the way might be different from each other, which has to be kept aside as our Prophet, peace be upon him, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, has guided us with Sunnah, not divided us in Shia, Sunni, or Wahhabi, or any tabqa. All India Ulama Board consists of many different castes, religion, and tribe to prove the unity of Indian Muslim. All India Ulama Board has always given the importance on the Indian Muslim unity pattern, which is again interrelated to Islam, as Islam teaches us to value everyone whether he or she have different ideology or caste or religion. Islam gives emphasis on being human. You could not be Islamic until and unless you are not a good person. Zakia Khan worked as All India Ulama Board Delhi President Women Wing. Added, the role of women is very big as Islam has given the equality and freedom to women in the era when child were killed. She also talked about the present situation where rape case in India is at its heights. She pointed on the Sunnah, which asks a male to keep their eyes below the knees at the same time to women to do hijab. She added it's time to spread the teaching of Islam as per Quran and Sunnah, which is sufficient to lead a better life here and hereafter. She remarked, Islam has never put any pressure on anything, not even on hijab or beard. It comes only when you are in true love for it. When you truly understand what Islam has given you, the convention was carried out. Award ceremony. Many senior journalists participated, including Ved Prakash ji, Santosh Bharti ji, etc. Social activist and field worker who served during the pandemic was awarded. Award was categorized as Farishta Award. The award was given on the basis on work carried out last year during pandemic. दिल्ली की प्रेसिडेंट खवातीन शोबा की मोहतरमा जकिया खान से गुजारिश करूंगा कि तशरीफ लाएं, 3 मिनट के अंदर माफी का इजहार फरमाएं। मोहतरमा जकिया खान साहब। अस्सलाम वालेकुम सारे ख़वातीन और हमारे साथ जुड़े हुए सारे लोगों को मेरा ख्याल मकदम है। बहुत बड़ा ये मौका मिला है हम सबको आज इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए अपने दीन के साथ साथ एक ऐसी बुनियादी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए लोगों तक पहुँचाने की जिसकी आज सख्त ज़रूरत है। सबसे पहला जो मुद्दा दुनिया में आज सब जगह, सिर्फ हिंदुस्तान नहीं, सिर्फ दिल्ली नहीं, हर एक जगह जो मौजूद सबसे बड़ा मुद्दा चल रहा है वो ख़वातीन की सिक्योरिटी को लेके चलता है। और इस्लाम में इतनी ज़्यादा पुरज़ोर तरीके से इसकी सिफारिश की गई है, हर जगह इसको बुलंदी पे पहुँचाया गया है। उस चीज़ को ही अगर हम सिर्फ अपने जो सोसाइटी है उसके बीच तक पहुँचा दें तो हमारा बहुत बड़ा काम, बहुत बड़ा एक अच्छा निज़ाम कायम हो जाएगा। जो गवर्नमेंट कर रही है, जो और सोशल एक्टिविस्ट लोग कर रहे हैं या जो भी और लोग कर रहे हैं, उससे अलग उलमा बोर्ड की जिम्मेदारी के तहत हम लोग अगर ये चीज़ लोगों तक पहुंचा दें
کہ کیا ہمارا حق ہے، کیا اسلام نے ہمیں عہدہ دیا ہے، کیا ذمہ داریاں دی ہیں، اور کیا ایک ایز اے خواتین بھی اور ایز اے میل فیگر بھی کیا ہماری ذمہ داریاں ہیں، کس طرح سے ہمیں پیش آنا ہے، کس طرح سے ہم اپنے زندگی کو گزارنا ہے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ آج کا جو کرنٹ موضوع ہے اس میں کافی بہت طرح کی چیزوں میں بدلاؤ آئے گا، اور اسلام کا نام جو ہر جگہ اسلام فوبیا کے نام پہ پھیلایا جا رہا ہے اس کی بھی بہت حد تک چیزیں صفائی میں آ جائیں گی۔